Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on Kurukshetra monthly compilation and I'll be discussing Kurukshetra for the month of April. As you know, YOJNA and Kurukshetra, these are the two important journal that is very important for your examination. Either it is prelims or mains. The reason being we are coming up with the compilation every month, right? So in this edition of Kurukshetra, we'll focus upon the month of April. So for the month of April, the Kurukshetra focus, the entire edition of this month is focusing upon empowering the rural women. इस एडिशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो कंप्रीहेंसिवली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट यू गेट एन होलसम आइडिया एंड यू ऑल्सो गेट एन आइडिया हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन मेंस एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स, राइट? एंड हाउ विल बी मूविंग इन दिस वीडियो, मैं आपको एक प्रीफेस बता दूं क्या क्या मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो आई हैव सेग्रीगेटेड द एंटायर आर्टिकल इन 3 सेक्शन ऑफ द जनरल स्टडीज. That is General Studies Paper 1, Rural Women Integral for the Atmanirbhar Bharat. Second है Women Farmers, important related topic. Third is General Study. Second is like General Studies Paper 2. यहाँ पे Nutritional and Health Link Empowerment और Women Entrepreneurship की बात है. जो Paper 3 में article important है, that is Financial Empowerment for the Women. So this is how we'll be moving in this entire video. Make sure you take a note of important points that we'll be discussing that would be again relevant for the mains and prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before that, if you are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. Starting with the first article, that is Rural Women Integral for Atmanirbhar Bharat. In this article, we'll see the important contribution of rural women in building India, which is self-reliant or Atmanirbhar. So women is the backbone of the society and they have played a positive role in shaping our society. Definitely, these are the positive aspects that the women has contributed in terms of building a society, not only for any individual household, but also in a society as a general. सो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अगर बात करें वुमेन की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइबल सॉल्यूशंस टू इंटीग्रेट वुमेन, जहाँ पे डेवलपमेंट गोल जो इंडिया की है, चाहे वो डेवलपमेंट ऑफ नेशंस हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के टारगेट्स हो, ये सारी चीज़ों को अचीव करने में वुमेन हैज़ बिन एन इनहेविटेबल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. So the empowerment and autonomy of the rural women will help them to provide political, social, economic and health status, right? So we need to ensure in all these 4 parameters, government is taking inclusive actions and even the stakeholders that are concerned, वो भी इसी तर्ज पे काम कर रहे हैं. Now, rural women participation की बात करें specifically in agriculture and elite sectors. So for the data that we have for 2011 and 12, जो women's की workforce की participations की बात करें, especially for the urban male and urban female, this is 54.6% for the male and 14.7% for the female. Now वहीं रूरल एरिया की बात करें तो जो मेल की पार्टिसिपेशन है वो 54% है और रूरल वुमेन की पार्टिसिपेशन 24% है. सो व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड दैट वुमेन्स की पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में ज़्यादा है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज. इन अर्बन एरियाज इट इज़ ओनली 14%. In rural area, this is 24.8%. This is the gap. This is basically the difference that you have to note. Now, in rural commodities की अगर बात करें, agriculture and elite sector, these are the primary source of livelihood for almost 80% of the economical active rural women. तो जो ग्रामीण भारत है उसमें women की economically active role आप देखें, this is 80%. Also, they are engaged in elite activities with management of livestock, milk collection, fish processing, collection of non-timber and forest produce. So these are the part where women are actively contributing in terms of overall development. Now mainstreaming of women farmer की बात की गई है, कैसे women farmers को mainstream में लाया जाए. So government एक नई concept start की है, this is known as gender mainstreaming in agriculture. This would ensure कि जो women की participation है agriculture में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके. So the mission was propagated to ensure the access to ongoing women orientation scheme resources across the rural setups. Now, even the beneficiary oriented scheme with special provisions of the rural women are approved by the Ministry of Agriculture and Farm Welfare. Now, there are special scheme that provide by the specific states जो कि implement हो रही है, जहाँ पे 30% जो expenditures है women farmer की वो state incur कर रही है, that is again being aided by the central government.
रूरल वुमेन खास करके अगर बात करें रूरल सेटअप में वुमेन एम्पावरमेंट पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया है. सो इन दिस बजट, द करंट बजट दैट इज फॉर 2022 and 23, the government has increased the allocations to scale up the mission towards the public health and well-being. The women specifically, they are living in the rural areas. तो rural areas के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि public health और well-being पे भी ध्यान देने की जरूरत है. Now the scheme, like some of the important scheme which is already there, basically that government has come up previously, तो उसमें कुछ important scheme है. Prime Minister Employment Generation Program, National Livelihood Missions, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना. ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि रूरल वुमेन को एम्पावरमेंट में मदद करेंगी. And they have made significant contribution in improving the status of rural women at the grassroots level. Now, setting up of Mahila Shakti Kendra, जिसको MSK भी कहते हैं, these are also set up at the district level to provide safety and security to the rural women. Now, ease of living की अगर बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोशिश की है that ease of living should also be promoted, which will definitely call for women empowerment initiative that was taken by the government of India to improve the overall well-being and lifestyle of rural women, specifically for the rural women. Now, Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, this was launched way back in May 2016, and this aims to provide clean fuel of liquefied petroleum gas, जो LPG की connections है वो दी गई, और इसके benefits almost 80 million rural women को मिली है. Now, flagship program for providing tap water connectivity to the rural household, जहाँ पे जल जीवन मिशन के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जिन्होंने हर घर जल की भी बात की, टैप वाटर पहुंचाने की बात की थी बाय 2022. सो दिस हैज अगेन बी एक्सटेंडेड फॉर एन ईयर और टू, बट गवर्नमेंट वुड इंश्योर दैट हर एक घर में एक टैप वाटर की कनेक्शन हो. मिशन शक्ति अगेन वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द सोशल इकोनॉमिक पैरिटी फॉर द रूरल वुमेन. तो मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. मेक श्योर you are aware of the ministry because कई बार prelims में सवाल पूछे जाते हैं, people tend to confuse, so do not get confused, take a note. हर एक मिनिस्ट्री, हर एक जो मिशन है उसकी मिनिस्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए. Now the scheme includes setting up of national, state, district level hubs that would empower women. Women के लिए एक helpless number बनाई जाएगी, one stop centers होंगे, सखी निवास होगी which would be working for women hostel, and सखी सदन which would be like a home that is to distribute it for the troubled women, crunches and etc. Now, Anganwadi services की अगर बात करें, that would be set up in the rural areas to provide household services to raise awareness about health and nutrition, because health and nutrition is something very important to control MMR and IMR. इनके लिए हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की खासा ज़रूरत है. Skill development for women, what are the important government policies that are working towards the skill development? उसमें सबसे important है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि एंटरप्रेन्योरियल शिफ्ट की तरफ काम कर रही है. शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जा रही है फॉर द यूथ एंड रूरल वुमेन. नाउ, महिला किसान सशक्ति परियोजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जहाँ पे अगेन स्किलिंग ऑफ रूरल वुमेन आर टेकन केयर ऑफ, एंड स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज इन एग्रीकल्चर एंड एलीड आर कंडक्टेड with the farmers, that is included under the national training institutes या फिर स्टेट के जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या फिर एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे, इवन फॉर द कृषि विकास केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सारी जगहों पे वुमेन को एम्पावर की जा रही है बाय इम्पार्टिंग देम द नेसेसरी स्किल फॉर द एग्रीकल्चर्स. नाउ, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन की अगर बात करें, सेवरल प्रोजेक्ट एम्स एट जनरेटिंग द एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल वुमेन that is being undertaken by the government of India. The first among them is Startup Village Entrepreneurial Program, जो कि implement हो रही है under दीन दयाल अंत्योदय योजना, जिसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ इंटीग्रेट किया गया. This is self-employment opportunities and financial assistance that would be given to create a local community enterprises. Now, in light of this, जो second important scheme है, that is महिला शक्ति केंद्र, developed by the Ministry of Women and Child Development, that has empowered the rural women through community participations. और यहाँ पे अवेयरनेस रेज की जाएगी ताकि जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन, मेटरनल केयर, हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा सके. Now, financial empowerment is again an important segment. See, we are
कंप्रिहेंसिवली कवरिंग द एंटायर आर्टिकल, ताकि अगर आपसे मेंस में किसी भी तरह पे किसी एस्पेक्ट से सवाल पूछे जाए तो आप उसको हैंडल कर पाएँ। फिनेंशियल एम्पावरमेंट की अगर बात करें, फिनेंशियल इंक्लूजन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So government has come up with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana that has boosted the prospects of rural women participation in formal sector. Now again Jan Dhan campaign की अगर बात करें, इसने इंश्योर किया था कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे बैंकिंग हो, सर्विसेज हो, डिपॉजिट अकाउंट्स हो, रेमिटेंसेस हो, क्रेडिट हो, इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, ये सब अफोर्डेबल बनाई जा सके वुमेन के. दिस वाज एक्चुअली द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Now, financial inclusion की बात करें, this has helped the rural people to fight the crisis during the COVID-19 pandemic, और एक uninterrupted financial aid भी दी गई via this account. And other initiatives include प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और ये सारी ऐसी स्कीम्स थी जिसने फाइनेंशियल एम्पावरमेंट दी है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने की कोशिश की है रूरल एम्पावरमेंट के लिए, रूरल वुमेन्स के लिए. Now, second topic is women farmer. We'll see some of the important content that is relevant for the women empowerment, or you can say women farmers. Agriculture can be an important engine for the growth and poverty reductions. Almost 64% of our population is employed in agriculture sector over India. And agriculture employ almost 80% of active women. जो total women है rural India में, उसमें 80% participation है women की in India, right? And these comprises only 33% of the labor force. ये 80% जो women है वो total labor force में 33% contribution देती है, and 48% of them are self-employed. So these data would be again relevant for your examination in the mains. Now in India, 85% of rural women are engaged in agriculture, and yet they own only 13% of their own land. Now, दीन दयाल अंत्योदय योजना, जो कि गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू लॉन्च की है. सो दिस एम्स टू रीच आउट ऑलमोस्ट 9 to 10 crore रूरल पॉपुलेशन हाउसहोल्ड बाय 2023 and 24. The promotion of community institutions and their capacity building is one of the core components of the DAY NRLM. एम क्या है इस पूरी मिशन की? द मिशन एम्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सपोर्ट टू कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे एक डाइवर्सिटी प्रोवाइड की जाएगी फॉर देयर लाइवलीहुड, इम्प्रूव देयर इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. नाउ द मिशन एम्स टू मोबिलाइज वन ऑफ द वुमेन फॉर ईच रूरल पुअर्स हाउसहोल्ड, दैट इज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये मिशन ने कोशिश की है दैट ऑलमोस्ट 8.17 करोड़ वुमेन इंटू 75 lakh सेल्फ हेल्प ग्रुप शो फार. Now, these community institutions have been collectively platform, जहाँ पे जो रूरल वुमेन है उनके पॉवर्टी को कम करने के लिए उनके लिए एक एक्सेस बनाई जाए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाए और मार्केट रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए. इस तर्ज पे ये मिशन काम कर रही है. Now, some major intervention that was taken with regards to the women farmer and how government has come up with that. So first is महिला किसान सशक्ति परियोजना. ये अगेन DAY NRLM में के थ्रू प्रमोट की जा रही है, और इसकी एम है दैट जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर एलीट सेक्टर्स, और खास करके जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ाई जाए, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक बताया जाए उनको, और जो वैल्यू चेन है इंडिया की वो ऑल्सो भी इंक्रीज, राइट. सो इट ऑल्सो एम्स टू इंश्योर न्यूट्रिशनल एंड पुअरेस्ट टू द पुअर बाय सिक्योरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी सर्विसेज बास्केट फॉर द पुअर हाउसहोल्ड. Now, focus of this area, क्या क्या focus है महिला शक्ति परियोजना की? So this covered basically three broad areas, जहाँ पे sustainable agriculture, non-timber forest produce, value chain development और livestock intervention and integrated with boot sustainable agriculture and NFI project के through ये implement होनी है. Now, sustainable agriculture ecological practices की अगर बात करें, so the key objective of the submissions are to enhance the productivity participation of women in agriculture. दूसरी core objective है to create a sustainable agriculture opportunities for women. Third is to improve the capabilities of women in agriculture and support their non-farm based activities. Fourth, to ensure कि women को nutritional security मिले और वो community level पे काम करें. Fifth is to enable women to have better access to input services, जो कि government और other agencies के through उनको aid की जाए. Now, the last but not the least is to enhance the managerial capacity of women in agriculture and better management of the biodiversity. Now, second is household level nutritional security. यहाँ पे जो supplements है, food supplement के through जो underprivileged poor women हैं
उनको एक स्मॉल न्यूट्रिशन गार्डन मॉडल पे काम की जा रही, जहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कोशिश की जाएगी विद supplementing the essential food item that is required. And nutritional garden provide an assorted mix of vegetables, fruit that is considered good or nutritious for the rural women. And this is also aimed to provide a platform for innovation, supplemented by the food production as well as opportunity to improve their livelihood. Now, these intervention technique जो promote करेगी nutritional security को and even around the income family optimal using the resources that is available for the poor farmers. Now, the other article that is nutritional and health linked empowerment. हेल्थ की अगर बात करें, वन ऑफ द बेसिक नीड्स है, फंडामेंटल राइट्स है हर एक इंडिविजुअल की, हर एक सिटीजन की, जो एक स्पेशल सिग्निफिकेशन देती है वुमेन्स को भी. सो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कंप्लीट हेल्थ फॉर वुमेन इज वेरी एसेंशियल if we want a society to progress in a sustainable manner. So women have significant role in rural India, and it makes health and nutritional status paramount for each family and even for the community they live in. Women power की अगर बात करें, जो women की poor health है, that has not only reduces the productivity but even the earning capacity that has hampered the ability to take care of their family. So women is the first person who take care of their entire family, promote first-hand education to the children, and even she is capable of running the entire household. Now, issues of food insecurity की अगर बात करें, food insecurity is a global problem जो कि contribute करती है हमारे nutritional deficiencies को भी. Inadequate और improper diet intake करने की वजह से जो reproductive years है वो भी कम हुए हैं. Deficiency की वजह से बहुत सारे health related problems भी women को face करने पड़े. Anemia is among one of them. Lack of nutritional related knowledge among the women is again a problem which has undernutrition and micronutrient deficiencies. कुछ essential nutritional linked intervention की बात करें जो कि specifically women's के लिए हैं. So improving the quality and quantity of food consumptions through easy access to food and rational would be something helping for the public distribution system जो कि designate करेगी supply. Even nutritional and eligible beneficiary would be getting something benefit under the integrated child development services. Generating awareness to improve household diets and even for the local foods, including the food productive, especially for the fleshy vegetables that include leafy green vegetables, fruits, dietary behaviors और nutritional और जो health educations हैं उसे भी promote करने की जरूरत है. Then only we can come to a conclusion that yes, women are adequately provided with a nutritional security. Now, preventing micronutrient deficiency is again a big concern. जैसे मैंने आपको बताया, एनीमिया और फॉलिक एसिड्स के प्रॉब्लम की वजह से वुमेन्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. डीवॉर्मिंग के इश्यूज भी देखे गए हैं. प्री कंसेप्चुअल फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स हैं. यूनिवर्सल एक्सेस टू आयोडाइज सॉल्ट. मलेरिया प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है. कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, आयरन के सप्लीमेंट्स और विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी दिए गए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. राइट. Improving access to basic healthcare, nutritional services, promoting early registration. प्रेगनेंसी के लिए इवन रजिस्ट्रेशंस गवर्नमेंट ने अर्ली प्रोवाइड की. इवन प्रोवाइडिंग द क्वालिटी नेटल चेकअप इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द फीट्स एंड इवन स्क्रीनिंग द स्पेशलाइज्ड केयर एट द रिस्क ऑफ द मदर्स. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन दैट वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन विद द एड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ना कुछ और गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात करें, स्पेसिफिकली जो वुमेन को पावर करने में मदद करेगी, हेल्थ सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देगी. देखते हैं कुछ उसको. So Mission Poshan is 2.0 that is integrated for the nutritional support which address the challenges of the malnutrition. यहाँ पे adolescent girl, pregnant women या फिर जो nursing mother है उनके साथ एक ये कोशिश की जा रही है ताकि उनको nurture किया जाए, उनके health को, उनके wellness और immunity को. So this would be again the main aim of the Mission Poshan. यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू एक कैपिटल डेवलपमेंट की जाएगी कंट्री की, जहाँ पे malnutrition challenges को एड्रेस किया जाएगा. It will promote for the nutritional awareness, appropriate eating habits क्या होनी चाहिए women's के लिए, उस पर ध्यान होगी, and even address the nutritional deficiency through the key strategy. Government has come up with very important initiatives which call for nutritional security and even improving the overall health for women and children. Now, Mission Shakti उसी चीज में एक important scheme है that call for safety, protections, rehabilitation, empowerment. इसके दो important schemes हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं. सांबल और सामर्थ्य. राइट. सांबल इज सम स्कीम
जहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ वुमेन कंप्राइजेज ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं, वुमेन के लिए हेल्पलाइंस बनाए गए हैं. दिस वुड बी अगेन अलाइंड विद द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. जो न्यू कंपोनेंट्स होंगे, नारी अदालत वुड बी प्रमोटेड टू गिव अ रेजोल्यूशन एंड जस्टिस टू द वुमेन एज अर्ली एज पॉसिबल. नाउ सामर्थ्य हब एक सब स्कीम है, अगेन दैट वुड एम्पावर थ्रू उज्ज्वला, स्वघर, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, नेशनल क्रेज सिस्टम्स एंड इवन प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के थ्रू एक अम्ब्रेला स्कीम जो ICDS है उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट होंगी. Mission Vatsalya. This aims to ensure that health and happy children are there. So fostering sensitive support to the synchronized ecosystem is a part of it. और state और union territories इसमें assist करेंगी in mandating the Juvenile Justice Act for achieving the SDG goal. जितने भी SDG goal के targets हैं that call for nutritional security, women empowerment and even call for the food security, that would be part of Mission Vatsalya. Now, women entrepreneurship, something again very significant and important. These are the top 10 women entrepreneurs in India. Many of them would be known to you as well. Now, women entrepreneurship is essential for any country, inclusive and sustainable economic development. जिस तरह से entrepreneurial skills इंडिया में बढ़ी है, women की participations भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं entrepreneurial sectors पे. They are recognized as a new engine for growth. Sixth economic census की अगर बात करें, they have cited that literature and women entrepreneurship in India. It reveals that 58.5 million business only has 8.5 million women owned by women, and merely 13.3% of the women are among the total number of entrepreneurship that is being operated in India. ठीक है, एक starting है, but again we have to increase this number. विमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान देने की बात की गई है. जो रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वर्ल्ड बैंक ने, उन्होंने कहा है कि विमेन बिजनेस एंड लॉ, दिस वाज द एक्चुअल रिपोर्ट नेम, दैट फोकसेस एक्सप्लिसिटली ऑन द विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट हो बिजनेस में. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ऑलमोस्ट nearly 2.4 billion women are working at the working age and still they are not getting affordable or equal economic opportunities. तो ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है जो कि हर एक स्टेट्स को, हर एक कंट्रीज को, हर एक स्टेट्स को देखने की जरूरत है. सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू इंटरवेन इन दिस पार्ट. Now, just 12 economists score 100%, indicating that women are having equal legal standard as par with the men. Gender equality is something very important when we call for entrepreneurship. Gender equality should be promoted. यहाँ पे gender equality is enshrined in our constitution that guaranteed equality for employment for both men and women. किसी एक individual को favor ना हो. And government with its policies has empowered women in its core since 55-year plan, that is for 1997 and 99. जहाँ पे role of women entrepreneurship एक काफ़ी important aspects हो सकती है हमारे economy के overall developments के लिए. So a direct essay can be asked in your UPSC examination about the women entrepreneurship and role in the Indian economy. Third is like third tier booster की बात की गई है women's के लिए. तो तीन important aspects हैं. First is self help group, women led enterprises और women led startup है. एक एक करके देखते हैं हर एक चीज़ों को. सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर बात करें, यहाँ पे रूरल वुमेन आर एंगेज्ड इन द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम. दीज आर यूजुअली वॉलंटियर ग्रुप दैट हैज सिमिलर बैकग्राउंड एंड पर्पसेस. ये मेंबर्स खास करके अपने शेविंग, क्रेडिट और सोशल इन्वॉल्वमेंट के पार्ट में काम करती हैं. These use effort for self-confidence and in the level that has to be increased for the women so that they can also be the part of self-help group. And it enables the family income to provide family member a better lifestyle, including education, children, and improvement of the family health. Women-led enterprises की अगर बात करें, in the women-led enterprises, the support from the government has been enormous. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो कि फैसिलिटेट करती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को, सच एज स्टैंड अप इंडिया. स्टैंड अप इंडिया एक ऐसी स्कीम है जो प्रमोट कर रही है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ST and SC एज वेल. सो दोज who are the marginalized section of the society are also being benefited. Another initiative by government is to provide support to the women entrepreneurship via Mahila E-Haat, ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल, जहाँ पे ई-मार्केट आपको पता होगा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, and even support to women entrepreneurship. Now, the platform offers an opportunity for the women entrepreneurships to leverage the so-casting product manufactured by them. Now, women-led startups की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना is another scheme by the government of India.
जो कि एक्सेस कराती है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर द स्मॉल बिजनेस and those who are the part of MSME as well. So this scheme allowed the women entrepreneurship to avail 10 lakh rupees for a small and micro enterprises. वी हब एक अलग कैंपेन है जो एक इनिशिएटिव है तेलंगाना गवर्नमेंट की. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, सो दिस इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट लेट इंक्यूबेटर टू वुमेन फोस्टर देयर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. और यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन इंक्यूबेटर्स फोकसिंग ऑन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट दैट इज तेलंगाना. और ये पूरी अक्रॉस इंडिया में भी इस तरह की तर्ज पे काम करने की जरूरत है. दिस कैन बी द रोल मॉडल फॉर अदर स्टेट एज वेल. नाउ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, नीति आयोग ने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात की है. दैट इज फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म दैट वुड ब्रिंग टुगेदर वुमेन सक्सेस एंड फैसिलिटेट द ईज ऑफ एंटरप्रेन्योरल जर्नी. तो ये एक ऐसी पोर्टल होगी जो वुमेन को नर्चर करेगी, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगी जहाँ पे कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के साथ these women would be working. So there are three important aspects to this. First is Iksha Shakti, that represent motivation for an individual for an entrepreneurial and startup business skill. If they are willing to do so, they can definitely come ahead. Now Gyan Shakti, more concerned on the knowledge part, जहाँ पे knowledge और ecosystem create की जाएगी for the women to foster their entrepreneurship. Now the last but not the least is a Karm Shakti. Karm Shakti means providing hand-on supports to the entrepreneurial in scaling up their business. So these are the three important landmark, or you can say the roadmap coming up from the Niti Aayog that has launched the women entrepreneurial platform. So if you're writing in mains paper, this is a must that you have to incorporate in your answers. Now, financial empowerment of women, again something very significant to ensure that women are financially sound, they are financially empowered to take the decisions. Now, financial inclusion की अगर बात करें, this is considered to be an indicators for development and well-being of a society and a globe. So, women financial empowerment is prerequisite for a sustainable development, जहाँ पे pro poor growth हो सकती है और achievement है जितने भी SDG के targets के जितने भी goals हैं उसको achieve करना भी काफ़ी आसान होगा. According to UN Women, the United Nations entity dedicated to gender equality and empower the women. Rural women are the key agenda for achieving the transformational economic and environmental and social change that require the sustainable development for the women and society in general. Economic and social condition of women की अगर बात करें, as per the Global Gender Gap Index Report 2020, that has been published by the World Economic Forum. I think most of you must be aware of this. अगर आपको पता नहीं है तो आप ये इंडेक्स और रिपोर्ट कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है वो आप जरूर देख लें. So India has ranked 112 out of 153 country, which is not a good ranking. And the India is ranked 108 of 149 in terms of the Global Gender Parity Gap Index. Now India's performance has marginally improved by this much percentage. Again, this is not good. We have to work harder on to get this parameter good. डायमेंशंस अगर बात करें जो जेंडर गैप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उनमें 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी. ये कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होंगे जिस पे ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं. नाउ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग विद वेरियस स्कीम्स जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट और स्पेसिफिकली रूरल वुमेन के लिए ये स्कीम है. Financial empowerment through through financial inclusion of the rural women can be the part of this, जहाँ पे प्रधानमंत्री or you can say the Prime Minister Jan Dhan Yojna is actively participating on that. Now the 7 years down the line from its inception, it has almost 43.04 crore accounts with the Pradhan Mantri or you can say the Prime Minister Jan Dhan Yojna. Now this Jan Dhan Yojna scheme has been most part of reaching initiatives towards the financial inclusion, not only for India but for the world as well. Now, कुछ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू प्रमोट फिनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर द वुमेन. अमंग देम फर्स्ट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू इंश्योर प्रोटेक्शंस फॉर द सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल, जहाँ पे एडोलेसेंस गर्ल के लिए एक उनको एम्पावरमेंट दी जाएगी. 11 to 18 एज की गर्ल्स जो होंगे उनकी स्किल, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड इवन वोकेशनल ट्रेनिंग विद द पार्ट फॉर इट. इफ दिस इज इम्पार्टेड दिस विल डेफिनेटली इटसेल्फ विल कॉल फॉर द फिनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर द वुमेन. अगर वो ट्रेंड है देन शी कैन अर्न, राइट. Mahila Shakti Kendra to empower the rural women with opportunities and skill development and employment. महिला पुलिस वॉलंटियर्स ये एनविसाज की गई है
जहाँ पे महिला पुलिस जो वॉलंटियर है वो असिस्ट करेंगी वुमेन्स को इन कनेक्टिंग पुलिस एंड कम्युनिटी, एंड दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट जो वुमेन डिस्ट्रेस होती हैं अपने कंप्लेंट ना लॉन्च करने के लिए, उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि उनको राइट की जो प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जा सके। राष्ट्रीय महिला कोष is an apex microfinancial organization which provide microcredit at concessional term for the poorer women and livelihood option, that is for the income generation activities. National Credit Scheme that provide women to take up the gainful employment through providing safe, secure or stimulating environment for the children. So those women who already have children, उनके लिए क्रिच फैसिलिटी क्रिच स्कीम लाई गई है ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे ले जा सके एंड दे कैन डेफिनेटली वर्क इंडिपेंडेंटली सो दैट दे डू नॉट हैव अ बर्डन ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना ये मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना, दिस विल प्रोवाइड हाउस होल्ड फॉर द नेम ऑफ द वुमेन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दिस विल इनेबल द लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू गेट द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वाया इम्पार्टिंग स्किल ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे एलपीजी के सिलेंडर कनेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं। एंड सुकन्या समृद्धि योजना एज एम्पावर्ड मेनी गर्ल्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन टू गेट द बैंक अकाउंट। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप्स की अगर बात करें, टू प्रमोट फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट हैज कम अप विद स्टैंड अप इंडिया, महिला ई हार्ट और ऐसे ही एंटरप्रेन्योरल और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट लेकर के आई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस for the micro and small businesses, and even some capital is also being provided, financial जो assistance है वो भी गवर्नमेंट दे रही है women's को। Now Prime Minister Employment Generation Program, this is something that is providing a micro credit subsidy that will be launched by merging the Prime Minister रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो RGP उनको मर्ज करके बनाया गया ताकि वुमेन को एक बेटर एक्सेस दिया जा सके माइक्रो एंटरप्राइजेस में, चाहे वो रूरल वुमेन हो या फिर अर्बन वुमेन्स हो, स्पेशली इन द नॉन फार्म सेक्टर्स। नाउ अंडर द स्कीम द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आर कवर्ड under the special category that is entitled for 25% to 35% of the subsidies depending upon rural or urban areas. तो अर्बन एरियाज में 25% है और रूरल एरिया के सेटिंग्स में अगर कोई प्रोजेक्ट सेटअप होती है तो वहाँ पे 35% तक वुमेन को सब्सिडीज दी जाएगी अंडर द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। So this was all about the details of the scheme that the government of India is providing, and this comes to an end of the compilation for the Kurukshetra. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis, IAS GAZETTE की मैगजीन है जो आप हमारे IAS ज्ञान के वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। FCS there, PIB compilation, MPR and gist of YOJNA and Kurukshetra. So this all initiative will help you to sail through the journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.